Hello students, uh, myself Mushir Ahmed, and today I am going to teach you another topic in history, end of Bretton Woods and the beginning of globalization. End of Bretton Woods, how to end of Bretton Woods agreements and the beginning of globalizations, and how to start globalization process in the whole world. Now let's start. By 1960s, US dollar lost its command in world currency. Before 1960, it means after the World War II, the value of dollar day by day increased. But by 1960s, US dollar lost its command in world's currency. Why? Because of that, the value of American currency decrease day by day. Now, after that, led to collapse of system of fixed exchange rates. US dollar lost its command in world's currency. It means after 1960s, the value of dollar decreased day by day. Why? Because of that, the collapse of system of fixed exchange rates. It means fixed exchange rates collapse. Why? Because of that, the value of dollar lost day by day. And introduction of a system of floating exchange rates. And now introduce a new system is called floating exchange rates. Fixed exchange rates, value of a currency fixed, but floating exchange rate day by day, the value of currency change day to day. That is called floating exchange rate. Separately, we will provide a video or a notes of fixed exchange rates and a floating exchange rates. Now the developing countries could turn to international institutions for loans and development assistance. You know that after the World War II, developing countries could turn to international institutions for loan and development assistance. After the World War II, developing countries looking for their reconstruction of their economy and rebuild their economy, they're looking for loan facility for international institutions, but we are now forced to take loan from commercial bank and private lending institutions in the West. But they force, it means international communities force to developing countries to take loan from these private lending institutions and other commercial banks situated in West. In the developing world, from time to time, there was a debt crisis due to which income would fall and poverty started increasing. In the developing world, from time to time, there was a debt crisis. The debt crisis increased due to which income would fall. Why debt increase? Due to loss of income and started increasing poverty. This problem appeared most frequently in Africa and Latin America. ये प्रॉब्लम, इस तरीके की ज़्यादातर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अफ्रीका and Latin America. That problem basically started from Africa and Latin America. Now, first of all, we discuss about the exchange rate. Through this arrangement, it means national currencies of different countries are linked to each other for the convenience of international trade. It means the national currency of different countries are linked to each other due to the convenience of international trade. There was generally two types of exchange rate: fixed exchange rate and the floating exchange rate. Fixed exchange rate, when the exchange rate is constant
it means stable, and government have to intervene to control the fluctuations that occur. Such exchange rate is called the fixed exchange rate. Now, the flexible or a floating exchange rate, this type of exchange rate keeps on increasing depending on the demand or objection of different currencies in the foreign exchange market, and in principle without the intervention of government. And the cheap labor in China became attractive destination for MNCs to manufacture and capture the world market. MNCs means multinational companies. Uh, it means a company operate more than one countries and sell their goods and commodities for more than one countries. That's called MNCs. So cheap labor in China became the attractive destination for MNCs. Why? Because of that cheap labor found in China to manufacture and capture the world market. It means through the cheap labor, China captured the whole market. It means whole market captured by China due to their availability of cheap labor. And with the globalization, India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. With the help of globalizations, India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. आज हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम ये जान रहे हैं कि 1960 के बाद से जो यूएस डॉलर की वैल्यू थी वो डे बाय डे घटने लगी। इससे जो फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम था वह कोलैप्स कर गया। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब ही यही हुआ कि when the exchange rate constant and government have to intervene, यानी एक्सचेंज रेट कांस्टेंट हो। हमने अगर डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दी और उसके कंपैरिजन में चीज़ों को हम एक्सचेंज करते थे तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट था, ये कोलैप्स कर गया जैसे ही यूएस डॉलर की वैल्यू कम हुई और इंट्रोड्यूस हुआ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो डे बाय डे वैल्यू पर डिपेंड करता था। अगर किसी करेंसी की वैल्यू दिन में कई बार घटती बढ़ती थी, इस पर डिपेंड करता था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो अब इस कंडीशन में जो क्राइसिस था वो जनरेट हुआ, चूंकि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोन की ज़रूरत थी। तो वेस्ट ने ये फोर्स किया कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपना लोन जो है वेस्ट के प्राइवेट बैंकों से और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लें। फोर्स किया उन लोगों को। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनमें क्राइसिस जो है, डेब्ट क्राइसिस डे बाय डे बढ़ रहा था क्योंकि उनकी इनकम घट रही थी और उनकी गरीबी बढ़ रही थी। ज़्यादातर ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये सिचुएशन जनरेट हुई क्योंकि भाई उनका जो डेब्ट क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा था। जो उन्होंने कर्जा लेकर रखा था वो नहीं चुका पा रहे थे, उनकी इनकम नहीं हो रही थी, इसलिए गरीबी भी डे बाय डे बढ़ रही थी। तो ये रीज़न है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों की सिचुएशन और पुअर होने की। अब दूसरी तरफ चाइना जो है चीप लेबर के बेसिस पर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन सिद्ध हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसको एमएनसीज आप कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है, तो चाइना चीप लेबर की मदद से अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया। जितनी भी बाहर की कंपनियां थी उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि उनके पास चीप लेबर अवेलेबल था। तो आसानी से पूरा वर्ल्ड मार्केट वो कैप्चर करने की कंडीशन में पहुंच गया चाइना।
With the globalization, India, China, and Brazil have undergone rapid economic transformations. ग्लोबलाइजेशन आप जान रहे हैं कि कमोडिटीज़ का, सर्विसेज का, ह्यूमन रिसोर्स का एक्सचेंज होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्रोसेस जो है, अब तक सिर्फ आप गुड्स और सर्विसेज को ही वो करते थे, अब स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी आप ट्रैवल कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। इससे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के नज़दीक आ गया है। इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गया है। और इस कंडीशन में, ग्लोबलाइजेशन की इस टाइम पीरियड में, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन माने जाते हैं। आज की डेट में बहुत तेज़ी से आर्थिक बदलाव इन कंट्रीज़ में हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि ये एक तो लार्ज पॉपुलेशन का एरिया है और लार्ज कंज्यूमर का भी एरिया है। इसलिए एक लार्ज मार्केट के शेप में ये एमएनसीज इन कंट्रीज़ को देखती हैं। इनके इन्वेस्टमेंट से इन कंट्रीज़ में जो रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है वो अपना इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ में कर रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट उनको कहीं और नहीं दिख रहा है। भाई एज ए कंज्यूमर, इतना बड़ा कंज्यूमर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो अगर आप इन तीनों कंट्री की पॉपुलेशन को मिला लेंगे तो वो आधी से ज़्यादा आबादी है दुनिया की। तो इतना बड़ा कंज्यूमर कहाँ मिलेगा? इसलिए ग्लोबलाइजेशन की मदद से उस ग्लोबलाइजेशन ने इन कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया है, ताकि बाहर की कंट्रियाँ आकर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और लोग पॉवर्टी से बाहर भी आ रहे हैं। और जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो तेजी से हो रहा है इन कंट्रियों में। सो नाउ दैट इज द टॉपिक, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन।